अभी अभी डीसी ने ड्रॉप किया है अपना नेक्स्ट 10 ईयर का प्लान। तो जेम्स गन ने अभी अभी वीडियो अपलोड किया है, तो उसी चीज़ का हम लोग अभी रिएक्शन देने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल फटाक से चालू कर भाई, बहुत एक्साइटमेंट है। एक्साइटमेंट तो बहुत है। Hey everybody, I'm James Gunn. I'm the co-CEO of DC Studios. So as many of you know, DC has been disconnected in film and television for a long time. And it's one of, our jobs, mine and Peter's, is to come in and make sure the DCU is connected in film, television, gaming, and animation. That the characters are consistent, played by the same actors, and it works within one story. And if something is outside of that, like Matt Reeves' Batman or Todd Phillips' Joker or Teen Titans Go, that it is clearly labeled as DC Elseworlds, outside of the mainstream DCU continuity. Now, Peter and I have gotten pretty lucky in terms of the 4 projects that are coming out over the next year. First, we have Shazam! Fury of the Gods. Shazam has always been off kind of in his own part of the DCU, so he connects very well. That moves directly into The Flash, a fantastic movie that I really love, that resets the entire DC universe. Then to move into Blue Beetle, a fantastic film about a kid who's a marvelous part of the DCU, and then into Aquaman 2, which leads directly into our next few projects, which I'm going to tell you about now. So, Peter and I, along with a group of very talented writers, have started to map out an 8 to 10 year plan of what DC Studios will be in film, television, and games. This first chapter is called Gods and Monsters. Now, this, what I'm about to tell you, is a part of the first chapter. It's not the entire first chapter. The first project is Creature Commandos. Creature Commandos Guardian of the is an Galaxy पे नहीं animated लग रहा series. team. I've written all the episodes. Groot. Something we're going to do Groot that's a little bit different. Rocket. We're going to have characters move into animation, out of animation, usually having the same actor Ghost Rider. who plays them in live action. The next project up is Waller. This is a story of Amanda Waller played by Viola Davis. Viola Davis is going to team up with members of Team Peacemaker, and this is a story that's been created by Crystal Henry, who did Watchmen, Jeremy Carver, who created the Doom Patrol. It is a fantastic story that's out of this world, and I can't wait for people to see it. Okay, next up is the big one, the true beginning of the DCU. This is called This is I'm in the middle of it. I'm having a great time doing it. निकाल रहे हो, बुला रहे हो उसको। July 11th, 2025. Finally, the next thing is a big premiere HBO television series called Lanterns. This is a story of Lanterns, Jon Stewart, and Hal Jordan. पहली बार ही मानेंगे हम लोग। Deadpool वाला तो मानेंगे This is नहीं really a terrestrial-based TV show, which is almost like True Detective with a couple of Green Lanterns who are space cops watching over Precinct Earth. In it, they discover a terrifying mystery that ties into our larger story of the DCU. Next is a big movie called The Authority. The Authority is a passion project of mine. It's based on the marvelous Wildstorm characters. We are now bringing into the DCU and will interact with all of our primary DCU characters. The Authority are a group of superheroes who think the world is broken and they want to fix it by any means necessary. I think it's a very different look at superheroes. We're doing a television series called Paradise Lost. Paradise Lost is on Paradise Island, usually known as Themyscira, which is the birthplace of Wonder Woman. It's almost like Game of Thrones, but with all of the inhabitants of Paradise Island. The introduction of the DCU's Batman is The Brave and the Bold. The Brave and the Bold is the story of Batman and his actual son, Damian Wayne. अरे नाइस यार, बेस्ट। मतलब एक साथ दोनों कैरेक्टर मिटा दिए ना, मजा आया। रॉबिन बैटमैन assassin who Batman tries to get in line, and so this is the story ये बहुत अच्छी हो and the beginning of sort of the Bat family in the DCU. Next up is a TV series called Booster Gold. Booster Gold is one of comics' really popular cult heroes. He is a fascinating guy. He's a loser from the future who uses future technology to come back to present day and become a superhero so that people will love him. It is basically the superhero story of imposter syndrome on an HBO Max series. One of my favorite comic book series from last year was Tom King's run on Supergirl, Woman of Tomorrow. And so we're going to turn that into a big science fiction epic film. Now, Superman is a guy who was sent to Earth
and raised by loving parents. Where अच्छा ना, मतलब Supergirl दो in this पर्सपेक्टिव देखने story, मिल she जाएगा, is a एक ही character मतलब who was उसका। इसको देख raised के on थोड़ा a समझ chunk में of आएगा, मतलब Krypton. She देख watched के लग रहा है everybody कि around her मतलब in जैसा brutal a होगी। पोस्टर terrible दिखा रहे way. हैं, अगर So वैसा she's a दिखा much देना more तो jaded फिर तो character. मज़ा ही आ And जाएगा that उस brings चीज़ me में। to Swamp Thing, the last Swamp thing we're going Thing. to talk about. A very dark horror story in the हाँ origins यार, इसमें of एकदम the हॉरर ही मज़ा monster आएगा। who is Swamp Thing. And although it's totally outside of the rest of the Multiverse of DCU, Madness it will जैसे ही नहीं still होना feed चाहिए into horror। the rest of the stories. Anyway, those are the Horror था वो? stories that I वो can tell you comedies about में आती है right क्या? now. I've loved the DC characters since I was मेरे a को तो रोना आ रहा child. था। They're incredibly important to me. भाई मेरे को डर I लग knew रहा that था। this was a once-in-a-lifetime वैसे opportunity zombie to वाला do ऐसे आया something था। very different. One of the things that's very important for me in all of these movies and TV series is that the director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique and something special. Storytelling is always king. That's all that matters to us. And I want to be true to those stories. I want to be true to Content you is guys and really give you something different than you've ever seen before. Anyway, thank you, everybody. Nice, I यार, appreciate मस्त you बनाया। watching. You're I hope welcome, this भाई। was exciting for you because it's really exciting for me. And I can't wait to start to dive into these stories with you guys on this grand adventure. Thank you so much. नाइस, अच्छा था, एक नंबर बताया है इन लोग। ये लेकिन- अब फाइनली लग रहा है कि कुछ प्लान है इन लोग के पास। हाँ, मतलब थोड़ा इन लोग ने बोले थे जनवरी में रिलीज करेंगे, एकदम 1.5 घंटा हाँ, जनवरी मतलब हाँ, खत्म delay होने के नहीं किए। 1.5 घंटा पहले रिलीज किए 10:30 बजे रात में। हाँ, लेकिन यार वर्थ इट था। अच्छा है, प्लान तो पूरा अच्छा दिख रहा है। इसमें जैसा बोला मॉन्स्टर्स भी हैं इंक्लूड, गॉड्स हाँ, भी हैं इंक्लूड, अपने को भी शुरू में अपने को भी नहीं पता था यार मार्वल के इतने सारे कैरेक्टर्स है हाँ। करके, अपने को भी 2-4 के ही नाम पता था। अब ये सब जब आएंगे हाँ, और तब ऐसे अपने को भी कैरेक्टर ये पता फेमस लगेगा। किया है जो कोई जानता भी नहीं था। हाँ। अरे यार इसका वो पीस मेकर क्या बेहतरीन है, Peacemaker मतलब तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा बनाया था वो। अरे असम उसकी कास्ट बहुत अच्छी, कास्ट हाँ अच्छी है, एकदम परफेक्ट लग रहा है जॉन सीना कैरेक्टर की उसमें। स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छी है बहुत भाई वो। जबरदस्त। अच्छा है, तो मतलब ये कर सकता है अगर इसके अंडर पे रहा तो अच्छे अच्छे छोटे छोटे थोड़ा- कैरेक्टर भी ना उठा देगा हाँ, ये। अब अपने को ऐसा क्योंकि- लग रहा है कि डीसी पिछड़ गया है, क्योंकि अब ये लोग रीबूट कर रहे हैं। लेकिन यार मार्वल को भी 10-12 साल 10-12 साल लगे बहुत ना। टाइम लगा ना उन लोग को भी, क्या उनको भी कैरेक्टर time चलेगा लगा, क्या हाँ। नहीं चलेगा वो अभी भी नहीं है कंफर्म उस चीज़ में। हाँ, पर इन लोग मतलब अगर वो कर लेते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ मतलब है। स्टार्ट करना, शुरू से स्टार्ट करना भी बहुत बड़ी Zero बात से कर होती रहे है। हैं। हाँ, तो और न्यू स्टोरी लाना, वही सारी रिपीटेड नहीं ला रहे सारी हैं पूरा। नहीं तो हर कोई सोच रहा था कि वंडर वुमन नई वाली आ जाएगी, हाँ, हाँ। एक्वामैन नया वाला आ जाएगा, है ना, बैटमैन सुपरमैन सबको नया नया वाला लाएंगे और ख़त्म। तो मिलते हैं फिर, अगर इसके बारे में और आपको डिटेल में जानना है तो अपने दूसरे उसमें चैनल में मिल सकते हैं जिसका नाम है आउट ऑफ पॉड। तो उसमें हम लोग जनरली 1-2 घंटे बैठ के डिस्कस करते हैं ये सब डीप में। तो और आप वो उस हम channel लोग में- ज़्यादातर लाइव ही करते हैं, तो तो आप आओ, लोग लाइव आकर साथ में ज्वाइन डिस्कस करो और कर देखो सकते हैं। और बातें करो हम लोग से। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। बाय बाय। बाय बाय।